तो न्याचुरालिज्म 17th एंड 18th सेंचुरी मध्य रे यार प्रादुर्भाव देखा जाइतिला जोडा से वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशनल इंप्लिकेशन सेकंड रहउची जे न्याचुरालिज्म 7th एंड 18th सेंचुरी रे देखा जाइतिला तो न्याचुरालिज्म तो तार फादर होचंदी इमाइल जोला इज द फादर ऑफ न्याचुरालिज्म मीनिंग ऑफ न्याचुरालिज्म तो न्याचुरालिज्म रो अर्थ कोन Naturalism is a philosophical approach emphasizing the natural world जोड़ा कि प्रकृति बा प्राकृतिक पदार्थ उपरे अधिक गुरुत्व देता है नेचुरल वर्ल्ड प्राकृतिक जगत एवं एम्पिरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी विज्ञान सम्मत इंक्वायरी करता है एवं एविडेंस कलेक्ट करता है मेन थीम तार कोन फोकस ऑन नेचर एंड नेचुरल लॉज ताले या नेचुरल तो नेचुरलिज्म नॉर्मली नेचुरलिज्म रु जाना पड़छ जे एटा नेचर सहित रिलेटेड बा प्रकृति सहित रिलेटेड बोलिका तो सेति लागि तार मेन थीम रहउची जे फोकस ऑन नेचर एंड नेचुरल लॉज तो नेचुरल लॉज ऊपर एटा फोकस करथाय आउ नेचर प्रकृति ऊपर फोकस करथाय आउ तार मेन थीम रे कोन रहउची रिजेक्ट द सुपरनैचुरलिज्म emphasizes empirical evidence and observation. Deterministic worldview. Core idea तारा होची understanding the world through science and observation. तो पर्यवेक्षण और विज्ञान माध्यम रे सारा विश्व को बा वर्ल्ड को बुझिबा हेउची यार मुख्य लक्ष्य नेचुरलिज्म जो वर्ड अच्छी दी वर्ड नेचुरलिज्म कम्स फ्रॉम लैटिन नेचुरा मीनिंग होची नेचर नेचुरा लैटिन वर्ड रु आसी अछि जार अर्थ होची नेचर बा प्रकृति तो डिराइव फ्रॉम नेचुरलिस मीनिंग ऑफ नेचर तले एटा नेचुरा आउ नेचुरलिस्ट रु आसी अछि जार बोथ रो अर्थ होची प्रकृति बा मीनिंग होची नेचर देन एम्स ऑफ नेचुरलिज्म द नेचुरलिज्म रो एम्स कोन होची देखिबा अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड ताले नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करिवा होची यार लक्ष्य एक्सप्लेन फेनोमेना थ्रू नेचुरल लॉज को व्यवहार करी हमर एक्सप्लेन फेनोमेना विभिन्न प्रकार घटना को एक्सप्लेन में व्याख्या करिवा कथा कहिछि से प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च साइंटिफिक इंक्वायरी विज्ञान सम्मत इंक्वायरी करथाय और रिसर्च करथाय सेही थ्रू रे तार चीफ एक्सपोनेंट होजंदी तो चीफ एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म रो समर्थक को माने देखिबा वेस्टर्न फिलोसोफर होजंदी अरिस्टोटल जे के होजंदी ग्रीक फिलोसोफर देन आछि इम्पिकरस ग्रीक फिलोसोफर से भी रेने डेस्कार्ट्स फ्रेंच फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट मध्य एक धारा से फिलोसोफर और साइंटिस्ट मध्य थिले जॉन डीवी द अमेरिकन फिलोसोफर देन ईस्टर्न फिलोसोफर को कथा यदि चिंता करा जाए तो बुद्ध सिद्धार्थ गौतम इंडियन स्पिरिचुअल टीचर लाओ तिजू चाइनीज फिलोसोफर चुआंग टिजू चाइनीज फिलोसोफर एंड चभका इंडियन फिलोसोफर लोकयात टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म तो नेचुरलिज्म रो टाइप्स कोन हमें देखिबा मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म जोटा कि रियलिटी ऊपर फोकस करे एंड एपिस्टेमोलॉजिकल नेचुरलिज्म जोड़ा नॉलेज बा ज्ञान ऊपर फोकस करे ज्ञान मीमांसा बोलिका एपिस्टेमोलॉजी को कहा जाए तो एपिस्टेमोलॉजिकल नेचुरलिज्म को हमें नॉलेज बा ज्ञान संबंधी बोलिका कहि थाउ बा या ज्ञान संबंधी तत्व को तर्जमा करि थाए एवं एथिकल नेचुरलिज्म एथिकल नैतिकता जहा कि मोरालिटी ऊपर फोकस करि थाए तो लिटरेरी नेचुरलिज्म लिटरेचर ऊपर फोकस करि थाए
ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म जोटा कि एक्जिस्टेंस व अस्तित्व ऊपर फोकस करिथे नेचुरलिज्म क्लासिफिकेशन तो नेचुरलिज्म रो क्लासिफिकेशन कोन है जे फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म लिटरेरी नेचुरलिज्म एंड साइंटिफिक नेचुरलिज्म थ्री टाइप्स रे डिवाइड करा है ताको तो फिलोसॉफिकल गोटे लिटरेरी गोटे साइंटिफिक गोटे नेचुरलिज्म देन मेथड्स ऑफ टीचिंग टीचिंग मेथड को भलिया हवा दरकार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण माध्यम रे शिक्षा एवं एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट माध्यम रे शिक्षा लर्निंग फ्रॉम नेचर ताले प्रकृति रो ही शिक्षा करा जाई थाए आदरे माने हमर ऋषंकर मत जो टाइप रो रहउची जे प्रकृति को फेरी जाओ सेई सब ऊपर फोकस करते नेचुरलिज्म दा हमर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो कथा रुसो कहिथिले जे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा तो सेटा को फोकस दिया छि नेचुरलिज्म रे मध्य द मेथड ऑफ टीचिंग रे जाउची टीचर रोल कौन रोल हूँ टीचर फैसिलिटेटर गाइड एंड ऑब्जर्वर कहीं जेहेतु स्टूडेंट सेंटर लर्निंग रोचे तो टीचर एज अ गाइड टीचर रोल टा गाइड हिसाब से ही ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट तार रोल टा को टोटल तारी पर फोकस दिया स्टूडेंट सेंटर चाइल्ड सेंटर अप्रोच एप्लीकेबल हम देन द टीचर एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी provides opportunities for hands-on learning, support students' natural curiosity and development. Discipline तांगा मतरे श्रृंखला नेचुरलिज्म रे श्रृंखला कोन देखिया को पड़िबो तो वर्तमान determinism behavior shaped by genetics, environment and experience focus on understanding consequences, emphasis on self-regulation and personal growth, holistic approach like physical, emotional, intellectual. तो निज ऊपर एम्फासाइज कले ही आमे आत्म श्रृंखला कथा सेथरे कुआ जाईची तो सेथरे जाउची फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सब इंक्लूड हो जेथरे तो करिकुलम होची चाइल्ड सेंटर्ड एक्सपीरियंस बेस्ड फोकस ऑन नेचुरल साइंसेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स ऊपर फोकस कराई चाइल्ड सेंटर्ड रोची जोड़ा कि शिक्षार्थी केंद्रिक एक्सपीरियंस बेस्ड अभिज्ञता माध्यम शिक्षा को एटी बेसी फोकस कराई तो करिकुलम रे भी से ही रोची जे पिलाटी निजर एक्सपीरियंस और अभिज्ञता माध्यम बहुत किसी शिक्षा करि पारि थाए आज जो ऋषंगर मत जो टाइप रथला तार एथरे सिमिलर रोची तो फोकस ऑन नेचुरल साइंसेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव सब्जेक्ट कौन रोचे इंक्लूड द नेचुरल साइंसेस बायोलॉजी फिजिक्स chemistry mathematics practical skills like agriculture and crafts exploration based learning तो नेचुरलिज्म रो कंट्रीब्यूशन कौन रोचे एजुकेशन प्रति देखिबा emphasize on hand on learning ऊपर emphasize दबा को ये कहितला and focus on scientific inquiry and empirical evidence child centered approach आर मेन कंट्रीब्यूशन होची एजुकेशन प्रति जे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को है या एनकरेज करछे आ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कथा डिस्कशन करछे बा तार कंट्रीब्यूशन एजुकेशन को होची जे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच and importance of practical skills and real world experience तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स को बोल भाबे डेवलपमेंट हबो से कथा सेटा ही होची तार कंट्रीब्यूशन एजुकेशन प्रति देन एनकरेजेस सेल्फ डिस्कवरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग सेल्फ डिस्कवरी आउ क्रिटिकली थिंकिंग करिया को एथरे हुआ जायछि सेटा तार कंट्रीब्यूशन तो आज पे एति कि थिला थैंक यू।